Okay, now let's get started. Longitude and latitude. Okay, this is also theme our Earth. Okay, its theme is Ankit is very happy. His uncle, who lives in Canada, is coming to visit him in India. When you are coming to Delhi, uncle, it will be so much fun to have you with us. It will be soon, dear. First, I will have to go to the Frankfurt and then to Istanbul for some work. My uncle is always traveling to these amazing places. Let me check the map and find out the location of these places. I am going on an adventure trip to beautiful places just like my uncle. I have this map to guide me. Now, learning outcomes क्या है इस चैप्टर के at end of the lesson, learners will be able to differentiate between relative and absolute location, identify the important latitude and longitudes, demonstrate कर पाओगे आप how a grid is useful for finding places. Let's talk. If you have to tell someone the location of a place, how will you do that? Okay, then start the lesson. We shall learn ways of describing a location. क्या वेज होते हैं लोकेशन को डिस्क्राइब करने के? रिलेटिव लोकेशन एंड एब्सोल्यूट लोकेशन. The absolute location of a place on the earth can be determined by using latitude and longitude. किसी भी प्लेस की लोकेशन एक्चुअल बताने के लिए हम उसे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से डिटरमाइन करके बता सकते हैं. What is location? Location is a place where something happens or where someone or something is positioned. Okay. There are two ways of describing a location, relative and absolute location. Then relative location, what is relative location? When the position of a place is described in relation to other places, it is called relative location. कि जो पोजीशन है किसी भी प्लेस की डिस्क्राइब करती है दूसरे प्लेसेस से रिलेशन टू अदर प्लेसेस के साथ रिलेशन बना के वो बताया जाता है. इट इज़ अ रिलेटिव लोकेशन. फॉर एग्जाम्पल, यू मे डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ योर हाउस टू योर फ्रेंड बाय स्टेटिंग हाउ इट इज़ रिलेटेड टू अदर प्लेसेस नियर बाय, लाइक कि उसके नियर बाय क्या है. इट इज़ टू लेफ्ट ऑफ अ बिग मॉल और जस्ट पार्क, लाइक दिस. We can use familiar landmarks and directions such as right, left, or straight ahead to give relative locations. Then absolute location tells us the exact position where a place is located on the surface of the earth. Your home address describes the absolute location of your house on the earth. You can also know about the absolute location of your place from a map. An absolute location is description of a place इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर प्लेसेस. लैंडमार्क क्या होता है? प्रोमिनेंट और वेल नोन फीचर ऑफ लैंडस्केप कि एक्चुअल में ये वही है. लोकेटिंग प्लेसेस ऑफ द अर्थ. अ ग्लोब हैज़ एन एक्सल दैट हेल्प्स इट टू स्पिन. द अर्थ ऑल्सो स्पिन्स ऑन एन इमेजिनरी एक्सल पर अर्थ स्पिन करती है, विच इज़ नोन एज द एक्सिस ऑफ द अर्थ. The two ends of the Earth's axis are known as two poles. The point at the top is known as the North Pole and the point at the bottom. Top है North Pole and the bottom है South Pole. North Pole and then North Pole and this the South Pole. Okay. The equator is an imaginary line that divides the Earth into two equal halves. ये equator है. Earth को two equal halves में divide करता है. और दिस इज़ कॉल्ड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये नॉर्दर्न होता है, ये सदर्न हेमिस्फीयर. द हाफ ऑफ द अर्थ अबव द इक्वेटर इज कॉल्ड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, हाफ एंड द हाफ बिलो द इक्वेटर इज कॉल्ड सदर्न हेमिस्फीयर. A globe or map has a number of lines drawn on it. In reality, there are no lines on the Earth's surface. These are imaginary lines that helps us to find out the absolute location of a place on the Earth. Latitude.
the imaginary line in each hemisphere drawn parallel to the equator. इमेजिनरी लाइन है इक्वेटर पर पैरेलली डली होती है, ठीक है. Up to the poles are called parallel of latitude. Since the earth is round, these lines are circular. They run in an east and west direction around the globe. The equator is the most important line of latitude. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन होती है इसके लिए. एक्सेल होता है एक लॉन्ग स्ट्रेट लाइन, एक लॉन्ग स्ट्रेट पीस ऑफ मैटर दैट कनेक्ट्स टू रोटेटिंग आइटम. लैटिट्यूड आर मेजर्ड इन डिग्रीज में मेजर किया जाता है. द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर मेजरिंग of the degrees of latitude is the equator. The diagram given here shows that the equator is at 0 degree latitude. The value of all other latitude is followed by letter N northern hemisphere, letter S southern hemisphere. Example, the latitude next to the equator in the northern hemisphere is 1 degree north. As we move further northwards, तो क्या होगा, द लाइन्स ऑफ द लैटिट्यूड आर नंबर एट 2 डिग्री नॉर्थ, 3 डिग्री, 4 डिग्री नॉर्थ ऐसे. सो on until we reach 90 degree north, which is the north pole. The latitude in southern hemisphere are numbered at the same way till we reach the south pole, which is located 90 degree south. The equator, also known as the Great Circle, is the longest latitude as we move northward and southward from it. Latitude decrease in size till they are reduced to a dot of the poles. Important lines of the latitude. Apart from the equator and the poles, there are 4 other important lines of the latitude. Tropic of Cancer, देखिए ये डायग्राम है. आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक इक्वेटर, इक्वेटर से ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और उससे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, फिर आर्कटिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल, ठीक है. तो ये 23 डिग्री नॉर्थ, 23 डिग्री साउथ. फिर आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ, 66 डिग्री, 66.5 डिग्री साउथ. Degrees measurements are often expressed as a number followed by a symbol. Longitudes. Longitudes, also known as meridians, are imaginary lines that run from the North Pole to South Pole. They too are numbered like latitude. According to international agreements, क्या होता है, the longitude passing through the Royal Observatory at Greenwich in England, United Kingdom, is accepted at 0 degree latitude. It is called prime meridian. The prime meridian is starting point for the measuring longitude. Other longitude are drawn to the east and west of the prime meridian. जो the meridians of longitude to the east of prime meridian are numbered from 1 degree east up to 180 degree east तक होता है. Similarly, the meridian of longitude of the west of the prime meridian are numbered as 1 degree west up to 1 degree east. 180 degree west. There are 360 lines of longitude, including the prime meridian. The prime meridian and 180 degree latitude create a circle. I divided the earth into 2 equal parts. The area between 0 degree longitude and 180 degree east is called the eastern hemisphere, and the area between 0 degree longitude से 180 degree west is called western hemisphere. 180 degree east and 180 degree west is the same longitude होता है. The international date line runs along it. The distance between two longitude is maximum at the equator. The distance decreases on one moves towards the pole where the longitude meet. The prime meridian passes through these countries: United Kingdom, France, Spain, Algeria, Mali, Burkina Faso, Togo, and Ghana. Longitude and latitude crisscross each other to form a network of lines known as grid. Longitude crisscross एक दूसरे को करते हैं, form a network of lines known as grid. The points in the grid where latitude and longitude intersect each other is called coordinates.
Coordinate help us to locate any place or point of the earth. ओके, इस तरह से जैसे ग्रिड बनी हुई है, ग्रिड के थ्रू क्रिस क्रॉस एक दूसरे से कर रहे हैं और इस तरह हम अपनी लोकेशन को फाइंड कर सकते हैं. दिस इज़ द मैप उत्तराखंड मेजर सिटीज़. तो आप इसको अच्छे से रीड आउट कर लेना कि उत्तराखंड की जो सिटीज़ है वो कहाँ कहाँ हैं, कैसे है. ओके, ये एक्सरसाइज है, बुक एक्सरसाइज. आई एम शोइंग यू, दैट विल बी इजी फॉर यू. क्वेश्चन आंसर्स है, थिंक्स एंड थिंक है सारा. थिंक किट ओवर है, एक्टिविटी कॉर्नर है ये. तो आप इसको एक बार पढ़ेंगे, समझेंगे. जब चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा तो आप इन सबको अच्छे से कर सकते हो. ओके, थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ like, subscribe and share my videos. It will very helpful for me to encourage me to make more and more videos for my lovely kids. Okay, thank you so much. Bye bye.